corona, COVID has come in India and the people are facing a problem, and after still we are focusing on India's infrastructure development and we are giving some nice budget to infrastructure that India should get developed and form some other thing in upcoming years. And according to me, मैडम जो भी चीज़ें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हर राज्य को और केंद्र को दिया है, आने वाले समय में आज उसमें खामियां निकालने से कुछ नहीं होगा. वी हैव सैक्रिफाइस आवर 2 years MP land fund for the development of this country, and I request few of my colleagues, they have mentioned कि the MP land fund what we have given to the central government अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम काम और डेवलपमेंट करके क्या करेंगे. इसलिए जो एमपी लैंड फंड दिया गया है, जो हेल्थ इशू पे दिया गया, उसको प्रॉपर्ली अगर तालुके प्लेस में, हॉस्पिटलाइज में, मेडिसिन में, मेडिकल्स में अगर यूज करते हैं तो आई थिंक ये जान से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. और आपने जो एमपी लैंड फंड लिया इसका दुख है, पर एक बात से हम जो जान बचा रहे हैं इस देश में उसके भी साथ खड़े हैं कि जान से बढ़कर इस देश में कोई चीज नहीं है, तो उसका भी अप्रिशिएट करते हैं. और अभी बहुत सारे कलीग्स ने फ्रॉम महाराष्ट्र दे स्पोक अबाउट जीएसटी. The amount has to be given by the central government. GST is remaining with the central government. We all knew from last 1 year we facing very horrible time in India. और हमें उसका बोलते हैं कि भावना पता है कि आपका नहीं देने का कारण क्या है, पर फिर भी मैं आपसे विनंती करूंगी जो जीएसटी हमारे महाराष्ट्र की सेंटर के तरफ कुछ बैलेंस है, आपने कृपया करके अगर वो जीएसटी देंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आज हॉस्पिटल की परिस्थिति बहुत खराब है. पूरे देश में अव्वल नंबर में हम कोविड में हैं, हम अच्छे कामों पे नहीं हैं. अव्वल नंबर है डेथ रेट्स में, हम अव्वल नंबर है कोविड में सबसे आगे नंबर्स में. तो मुझे लगता है अगर आप जीएसटी के द्वारा कुछ हमें दे सकेंगे तो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट्स होंगी, हेल्थ सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी और कुछ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम हमारे महाराष्ट्र में कर सकते हैं. फार्मर्स की परिस्थिति बहुत खराब है. మరి మీరు చేయలేరు బాగుంది కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎవడో చేయకూడదు కదా, మరి నేను ఎలా చేస్తున్నాను? నా దగ్గర పంపించండి, 1,00,000 మందికి తగ్గి చూపిస్తా, ఇంక్లూడింగ్ టైప్ 1. 1,00,000 మంది, కోటి మంది చేస్తే కోటి మందికి తగ్గి తీరుతుంది అంతే. దట్సాల్. ఇది నేను 5 ఏళ్ల క్రితం చెప్పా, ఇప్పుడు చెబుతున్నా. అంత కాన్ఫిడెంట్ చెబుతున్నా. నాకున్న అర్హత ఏంటో నువ్వు అడుగుతావమ్మా. ఇవాళ నేను క్యూర్ చేసినంతమంది, డయాబెటిక్ రివర్స్ చేసినంతమంది పేషెంట్స్ని ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కలిపి నాలో 1,00,000 మంది కూడా తగ్గించరా.